Hello everyone, welcome to the third module of the installer certification program, which is Luna FusionSolar Luna solution. ये मॉड्यूल भी लास्ट टू मॉड्यूल्स की तरह दो हिस्सों में डिवाइडेड है. नंबर वन इज़ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं लूना की एप्लीकेशन के लिए, बैटरीज की एप्लीकेशन के लिए. और दूसरा पार्ट है लूना एप्लीकेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिनेरियोज और पॉसिबिलिटीज़ जिसमें हम लूना बैटरीज को यूज़ कर सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्वर्टर्स, दो टाइप के इन्वर्टर्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. दो टाइप के इन्वर्टर्स हैं. सिंगल फेज इन्वर्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 6 kTL. इनकी MPPT और इनपुट स्कीम इज़ 2x2. दैट मीन्स 2 MPPTs और 2 इनपुट्स. इसका मतलब है कि हम इसमें दो स्ट्रिंग्स अटैच कर सकते हैं. फॉर लोकल कमीशनिंग इनके अंदर WLAN वाईफाई अवेलेबल होता है. फॉर कम्युनिकेशन एज इन कम्युनिकेशन टू द फ्यूजन सोलर क्लाउड बिल्ट इन वाईफाई अवेलेबल होता है. और सेकेंडली हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक्सटर्नल ऑप्शन, जो कि हैं स्मार्ट डोंगल WLAN FE और स्मार्ट डोंगल 4G. AFCI, as we discussed earlier, arc flash circuit interpreter is a protection feature, a safety feature, which is available in these single phase inverters. These inverters are compatible with SUN 2000 4WP optimizers, and two type of batteries are compatible with these single phase inverters, namely LG and Huawei. Second type of inverters that are compatible in this application is SUN 2000 3 kTL to 10 kTL. These are three phase inverters. The MPPT and input scheme is same 2x2. That means 2 MPPTs and 2 inputs, and you can connect 2 strings to a single inverter. For built-in communication, for local communication, there is a built-in WLAN, built-in Wi-Fi, and communication to the Fusion Solar and Fusion Solar Cloud. And Fusion Solar Cloud, we have two options: the smart dongle WLAN FE and smart dongle 4G. AFCI function is available in these inverters. PID recovery is also available. Ripple control is built in these inverters, and compatible battery is Huawei, and compatible optimizer is SUN 2000 450WP. Moving on, this is Luna battery, Luna ESS by Huawei. This is something जो अभी recently launch हुई है. और you can see इसके basically front और back view है. This is your back view. इसके यहाँ पे एक black start switch है. यहाँ पे इसकी back side पे एक heat sink लगा हुआ है. If you look at from the front, इनका एक DC switch है. ये power control module है. And these are your batteries. Each battery has a 5 kilowatt hour backup, and the maximum power each each module can provide is 2.5 kilowatt. And these three batteries can be attached to a single power module. That makes it around 15 kilowatt hour backup, and such two setups can be connected parallel, as in we can make it around 30 kilowatt maximum power backup. These batteries are mostly floor and support mounted, and very they are very good looking and small size batteries, which can be easily installed inside residences. Secondly, there is this backup box. Backup box की भी हमारे पास दो types हैं. Backup box BO is for single phase backup, and backup box B1 is for 3 phase backup. हम backup box BO की बात कर लेते हैं. तो ये compatible है जितने भी हमारे single phase के inverters हैं, starting from 2 kilowatt to 6 kilowatt, that is SUN 2000 2 kTL to SUN 2000 6 kTL. Rated output voltage is 220 volts, जो कि हमारे रीजन में अप्लायंसेस के लिए होता है. and it can range from, हम इसकी रेंज सेट कर सकते हैं from 198 volts to 253 volts. Switching time in case of hybrid, या in case of hybrid application, the switching time is 3 seconds. as in कि अगर आपकी in short अगर आपकी लाइट जाती है
तो ये 3 सेकंड में आपको पावर सप्लाई करना शुरू कर देगा। मैक्सिमम लोड जो आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ 5 किलोवाट। अब हम बात कर लेते हैं बैकअप बॉक्स B1। ये एक 3 फेज़ पावर बैकअप बॉक्स होता है। ये कंपैटिबल है सारे 3 फेज़ इन्वर्टर्स के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम सन 2005 KTL टू सन 2012 KTL। इसकी रेटेड आउटपुट है 380 टू 400 वोल्ट्स, दैट इज़ योर लाइन टू लाइन वोल्टेज। और इसको हम सेट कर सकते हैं 342 से 400 वोल्ट्स तक। ऑकवर्ड सिनेरियो में ये सिर्फ सिंगल फेज पावर सप्लाई करता है, दैट इज़ 220 वोल्ट्स टू 230 वोल्ट। स्विचिंग टाइम इसका भी इन हाइब्रिड सिचुएशन, इन हाइब्रिड एप्लीकेशन इज़ 3 सेकंड्स एंड इट इज़ इसमें एक ऑटो रिकवरी का ऑप्शन होता है इन केस जब लाइट वापस आती है, एज इन कि जब जिस टाइम लाइट जाएगी उस टाइम आपका सिस्टम बैकअप पे आ जाएगा, और जब लाइट आएगी तो इट कैन स्विच बैक टू द नॉर्मल ऑपरेशन। इसके साथ आप मैक्सिमम जो पावर कनेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ 3.3 kVA और 3.3 किलोवाट इफ़ यू हैव अ लोड एट योर रेजिडेंस। Next product is smart PV optimizers, but we discussed in detail before. Smart PV optimizer की application is to optimize your PV generation to for module level monitoring and to reduce the PV voltage in case it is disconnected from the inverter to the safety level so one does not get a fatal shock. उसके बाद आ जाते हैं स्मार्ट पावर सेंसर। इसमें हमारे पास सिंगल फेज़ भी मौजूद है, DSU666H, एंड 3 फेज़ स्मार्ट पावर सेंसर्स भी अवेलेबल होते हैं, DCSU666H फॉर 250 एम्पेयर्स मैक्सिमम एंड DTSU666H फॉर 100 एम्पेयर्स 3 फेज़। ये दोनों बाई डायरेक्शनल पावर मीटर्स होते हैं। ये इन्वर्टर के साथ RS485 पे कनेक्ट होते हैं। आप इसके अंदर मीटरिंग कर सकते हैं, एज एन आपने कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं, कितने यूनिट परचेज़ किए हैं, कितने आपकी प्रोडक्शन हुई है, वो सारी मीटरिंग कर सकते हैं। और इसके साथ आप अपनी इन्वर्टर्स को या अपने सिस्टम्स को ज़ीरो एक्सपोर्ट की स्कीम पे भी ऑन कर सकते हैं। CTs इंक्लूडेड होती हैं इसके पैकेज में। Moving on, as discussed earlier, we have a smart dongle WLAN-FE and smart dongle 4G. WLAN-FE is a Wi-Fi dongle. ये मैक्सिमम 10 इन्वर्टर्स को सपोर्ट करता है। अगर आप 10 इन्वर्टर्स को एक डेजी चेन में कनेक्ट करें और उसके साथ एक मास्टर इन्वर्टर के साथ आप WLAN-FE dongle लगा दें तो इट कैन काउंट इट एज अ सिंगल प्लांट। बट जब लूना के साथ आप इसको यूज़ करते हैं WLAN-FE को तो मैक्सिमम 3 इन्वर्टर्स कैस्केड हो सकते हैं जब आप लूना के साथ यूज़ कर रहे हो। इट इज़ प्लग एंड प्ले USB इंटरफेस जिसको आपने सिर्फ कनेक्ट करना है, कोई ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करने। इट इज़ यूज टू कनेक्ट द सिस्टम टू द FusionSolar क्लाउड। सेकेंड इज़ smart dongle 4G, maximum in case when you are not using Luna batteries, तब आप मैक्सिमम 10 इन्वर्टर्स को डेजी चेन करके मास्टर इन्वर्टर पे स्मार्ट डोंगल 4G लगा के उसको एज अ सिंगल प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर यूजिंग लूना 2000 तो उसमें मैक्सिमम 3 इन्वर्टर्स एक साथ कैस्केड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ प्लग एंड प्ले USB इंटरफेस एंड इट इज़ यूज टू connect your system to the FusionSolar cloud. FusionSolar app latest version is always available on the Huawei App Store. It is basically used for local commissioning of the inverters and also to connect the system to the FusionSolar management system. FusionSolar Smart PV management system is basically a cloud जहाँ पे आपके सारे commissioned system अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। आप इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं और आप इनकी ऑनलाइन ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, इसका IV कर्व डायग्नोसिस कर सकते हैं। और इसका वेबसाइट एड्रेस इज़ https://intl fusionsolar.huawei.com. Now coming to the second part, which is Luna application. First application is grid tied energy storage system application 1. हम इस टेबल में देख सकते हैं द इक्विपमेंट और द प्रोडक्ट्स, द Huawei products that we required to make this application possible.
First one is optimizer Sun 450 WP. It is optional as we discussed earlier कि ये हर सिस्टम के साथ ऑप्शनल होता है फॉर रेजिडेंशियल एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन के लिए इन्वर्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं 2 to 6 KTL सिंगल फेज इन्वर्टर्स या फिर 3 to 10 KTL 3 फेज इन्वर्टर्स. एज एन ये दोनों सिंगल फेज एंड 3 फेज दोनों सिनेरियोज के लिए ये एप्लीकेशन दिस एप्लीकेशन इज़ पॉसिबल. और पावर मीटर्स स्मार्ट पावर सेंसर्स जो इसमें यूज़ होंगे फॉर सिंगल फेज एज वी डिस्कस DSQ666H इज़ फॉर सिंगल फेज, DTSQ666H इज़ फॉर 3 फेज सिस्टम्स. Battery compatibility is Luna 2000 from 5 to 30 kilowatt hours. आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. नंबर ऑफ कैस्केडेड इन्वर्टर्स इसके अंदर नहीं होते बिकॉज इट इज़ अ सिंगल इन्वर्टर एप्लीकेशन. इसमें बैकअप बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है. कम्युनिकेशन के लिए फॉर local commissioning the WLAN Wi-Fi is used and the management system is the FusionSolar. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. As we can see, these are the PV modules, these are the DC switch, this is your inverter and this is your Luna battery which is extendable. Either you install one power module or you install the whole 6 power modules. This is expandable. This is totally up to you, up to your cost. Now we can see कि inverter की AC is connected to the AC switch which is connected to the main grid point of the house and power sensor is connected to the main grid line, right? अब जो इसमें important चीज़ देखने की है वो ये है कि what kind of battery mode does it support, this application support, this scenario support. This scenario supports the maximum self-consumption, time of use and fully fed to grid modes. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि it is not a hybrid system or an off-grid system जो कि लाइट के जाने के बाद भी चलता रहेगा. It will act like an on-grid system, that is जब आपकी लाइट जाएगी when you will lose the grid your system will shut down. But इसका benefit is that you can increase the production time of your solar system even after the sun has set. जब सूरज गुरूब हो चुका है तब आपकी बैटरीज भी वो प्रोडक्शन आपकी बैटरी से होगी. एज इन कि आपका जो PV का ग्राफ है प्रोडक्शन ग्राफ इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 5 to 30 किलोवाट आवर्स. एज इन आप उस पावर को ग्रिड में ही फीड कर सकते हैं. आप उसको टाइम ऑफ यूज़ एज इन पीक आवर्स के टाइम में भी चला सकते हैं और आप उसको मैक्सिमम सेल्फ कंजम्पशन के मोड पे भी चला सकते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकंड एप्लीकेशन विच इज़ ग्रिड टाइड ESS एप्लीकेशन 2. You can see the compatible devices for this application is also the same. The number of cascaded inverters is always less than 3 or maximum 3. Equal or less than 3 inverters can be used in this application. As in आप 2 या maximum 3 inverters आप parallel करके इनको यूज़ कर सकते हैं for the ESS for grid tied ESS. This does the same thing जो कि लास्ट एप्लीकेशन में इन्वर्टर्स कर रहे थे कि ये आपकी PV प्रोडक्शन का टाइम बढ़ा देंगे बट दिस टाइम यू विल हैव अ मोर लार्जर कैपेसिटी बिकॉज आपके पास एक से ज़्यादा इन्वर्टर्स आ गए और एक से ज़्यादा बैटरीज आ गई. तो इसका मतलब है कि आप अपना जो पीक आवर का लोड है या पीक आवर का टाइम है या सूरज गुरूब होने के बाद की जो प्रोडक्शन है उसके ग्राफ को और अपनी प्रोडक्शन को उससे और ज़्यादा बढ़वा सकते हैं फॉर अ बेटर पेबैक टाइम एंड ऑफ कोर्स अ बेटर ROI. Now coming to the second type of the application is grid tied and off grid ESS application 1. In this application these are the compatible products which include the optimizer, of course, the single phase and 3 phase inverters, residential inverters up to 10 kilowatt, and the power sensor single phase and 3 phase. The battery compatible is the Huawei Luna. We can cascade around maximum 3 inverters, but in this application there is only one inverter.
The backup box is also required in this application since it is a grid tied and off grid application, which means that जब आपकी लाइट जाएगी तब आपका सिस्टम ऑफ नहीं होगा. ये आपके कुछ स्पेसिफिक क्रिटिकल लोड जिसके ऊपर आपने लोड डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, ये उस लोड को पावर सप्लाई देता रहेगा जस्ट लाइक अ यूपीएस. बट देयर इज़ अ लिमिटेशन कि जो आप इसके ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एक सिंगल पावर बैकअप बॉक्स के साथ एक जो मैक्सिमम लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है दैट इज़ 3.3 किलो वाट. रिगार्डलेस कि आपके पीछे बैटरी बैकअप कितना है, 5 किलो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 किलो वाट टू 30 किलो वाट, बट द मैक्सिमम लोड यू कैन कनेक्ट, जो मैक्सिमम लोड आप एक पावर बैकअप बॉक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ 3 किलो वाट इन केस ऑफ 3 फेज इन्वर्टर. और एक सिंगल फेज इन्वर्टर की सूरत में द मैक्सिमम रेटेड पावर, लेट्स से कि एक इन्वर्टर आपके पास सिंगल फेज में 6 किलो वाट आवर का है, तो आप उसके ऊपर 6 किलो वाट का आपके पास एक सिंगल इन्वर्टर 6 किलो वाट का है तो आप उसके ऊपर 6 किलो वाट का लोड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो पावर सेंसर इज ऑप्शनल इन दिस एप्लीकेशन. As like all other system we discussed, the local commissioning is done by FusionSolar app by connecting to the inverter's built-in Wi-Fi or WLAN, and we have two options to connect our system to the management system. That is Smart Dongle WLAN FE and Smart Dongle 4G. Supported inverters are given, that is 2 to 6 kTL for single phase L1 and 3 to 10 kTL for 3 phase systems. Battery mode is maximum cell consumption, time of use, that is कि अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए हैं इस बैटरी को यूज़ करने के. बैकअप बॉक्स हमने क्या किया, हमने दो चीज़ें ऐड की एक ऑन ग्रिड सिस्टम में, बैटरी और बैकअप बॉक्स. It is very, I think it's very interesting that Huawei actually gives you an option to convert your on-grid system to a hybrid system. Basically grid tied and off-grid मिला के एक hybrid system बनता है, and Huawei actually gives you an option that you can convert your on-grid system to an hybrid system, and that's how it's done. Now I will again summarize this application. We can use it for maximum time of use, जिसमें आप अपनी प्रोडक्शन का ग्राफ एक्सटेंड कर सकते हैं, आप सूरज गुरूब होने के बाद भी कुछ पावर एक्सपोर्ट कर सकते हैं. एंड सेकेंडली इज़ योर हाइब्रिड एप्लीकेशन, जिसमें आप इन केस ऑफ ग्रिड लॉस या लाइट के जाने के बाद आप उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक लोड रन कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज़ ये एक बिल्कुल सेम एप्लीकेशन है, हाइब्रिड एप्लीकेशन, ग्रिड टाइड एंड ऑफ ग्रिड, जैसे हमने लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस की है. द ओनली डिफरेंस इसमें से फ़र्क ये है कि इसमें एक से ज़्यादा इन्वर्टर्स लगे हुए हैं. दैट इज़ कि इसमें दो इन्वर्टर्स लगे हुए हैं और इसमें दो बैकअप बॉक्सेस हैं. नाउ मैक्सिमम इस एप्लीकेशन में मैक्सिमम आप 3 इन्वर्टर्स को पैरेलल कर सकते हैं, इन 3 इन्वर्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, नॉट मोर देन 3, और जितने इन्वर्टर्स होंगे उतने आपके बैकअप बॉक्सेस लगेंगे. बट कीपिंग इन माइंड कि जब लाइट जाती है, यू डू नॉट हैव अ ग्रिड, तो जितने भी 3 इन्वर्टर्स हैं, एक से ज़्यादा और 3 से कम, एज इन के 2 इन्वर्टर्स हैं, 1 है, 2 है या 3 है, तो वो सिंक नहीं होते आपस में, बिकॉज जब आपकी लाइट होती है तो वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे होते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ, उसके फेज एंगल्स के साथ, सब चीज़ है. बट व्हेन यू लूज़ द ग्रिड तो ये सारे इन्वर्टर्स आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होते. दैट्स वाई हम बैकअप बॉक्सेस को पैरेलल नहीं कर सकते. एज इन if a single backup box has a 3.3 kilowatt capacity, तो हम उसको टोटल 6.6 कैपेसिटी नहीं बना सकते, 6.6 की कैपेसिटी नहीं बना सकता. Now moving to the next application, which is pure off-grid ESS application. These are the compatibility chart, as in the devices which are compatible in this application. Optimizer is not supported. Inverters is from 2 to 6 kTL, single phase inverters. Power sensors is not required. Battery is Luna. Cascaded you cannot cascade more than one inverters. Backup box is not required. Local commissioning is done with the built-in WLAN inside the inverter, and the smart dongles WLAN FE and smart dongle 4G is used to connect the system to the FusionSolar.
नाउ दिस ये सिनेरियो एक प्योर ऑफ ग्रिड सिस्टम का सिनेरियो है, एज इन द पीवी मॉड्यूल कनेक्ट है आपके इन्वर्टर के साथ, बैटरीज कनेक्टेड हैं आपके इन्वर्टर के साथ, और डब्ल्यू लैन कनेक्टेड है आपके इन्वर्टर के साथ. बट देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यहाँ पे एक ATS का ऑप्शन भी है. अब इस ATS के ऑप्शन में क्या होगा? ऑफ ग्रिड सिस्टम इज़ अ सिस्टम जहाँ पे आपके पास ग्रिड अवेलेबल नहीं है. ATS सिस्टम इसलिए लगाया जाता है कि जब तक सूरज निकला हुआ है, जब तक सनलाइट है, तब तक तो आपका सिस्टम आपको आपकी ग्रिड पॉइंट पावर देता रहेगा, आपका लोड सपोर्ट करता रहेगा. बट अ सिनेरियो विल कम जब आपका सोलर सिस्टम इतनी पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा कि वो लोड की डिमांड को पूरा कर सके. दैट्स वेयर द ATS सिस्टम कम्स इन. आपका जनरेटर किक इन हो जाएगा, या आपकी अगर कोई और पावर है वो इस आपके लोड को सपोर्ट करने के लिए इट विल किक इन. सो बेसिकली एनर्जी मीटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस सिनेरियो. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने की है वो ये नोट्स हैं. द ऑफ ग्रिड function can be enabled only if batteries are configured. If no battery is configured, off grid system cannot be set. It means कि off grid system के लिए batteries mandatory हैं. और हमें एक ऑफ ग्रिड सिनेरियो में अपने इन्वर्टर का फेज़ और फ्रिक्वेंसी हमें ख़ुद ही सेट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये किसी चीज़ के साथ किसी और सोर्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा. और आप वंस जब बैटरी शट डाउन हो जाएंगी, एज इन के बैटरीज ड्रेन हो जाएंगी सारी, जितना भी हमने SOC सेट किया होगा, उसके बाद द सिस्टम विल टर्न ऑफ और फिर सारा लोड सपोर्ट होगा ATS के थ्रू, अगर ATS के साथ एक और जनरेटर लगा हुआ है तो. वरना योर सिस्टम विल शट डाउन और ये नेक्स्ट डे जब सूरज निकलेगा तब ये बैटरीज चार्ज होंगी टू अ सर्टेन लेवल. उसके बाद फिर आपके लोड को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, एज इन के आपका लोड चलने लगेगा. Optimizers are not required in this scenario, and ATS and DG are optional, and that's pretty much it. अगेन हम इसको एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि एक इन्वर्टर के साथ हमने 4G डोंगल या WLAN FE लगा दी, or which connected your system to the management system. After that, this is your PV modules connected to the inverter. These are the batteries connected to the inverters, and a parallel ATS or DG system, or the genset system is a parallel to your inverter, and they are supplying the output of the ATS is connected to your main AC switch, and which is then connected to your load. So that is pretty much it, and I would like to highlight some points. Number one is that just to summarize it, Luna battery has basically 3 applications. First is grid tied ESS, which means it basically increases your solar system production time, as in you can use it in the peak hours when the grid is charging you, when the grid provider is charging you more, which is usually after the sun sets. You can use your batteries to support your load. Second application is a hybrid application, which means that it can also support your whole load during the peak hours. Your battery will be providing power to your grid point, and just in case you lose the grid, your critical load, the load you have distributed using the backup box, will be supported. It will stay on. While in the first application, which is the grid tied ESS, your system will like an on-grid system, and it will turn off in case you lose the grid. And the third application of Luna is your totally off-grid system. It will basically act like an individual power source, like a generator, or mostly like a generator, but a generator can be connected parallel to your solar system when you are using it as an off-grid by installing Luna. The diesel genset will be parallel, and either of these sources can provide power to your load.
So that's pretty much it from my side. Thank you for joining. In case you have any questions, you can contact me, and we will be sharing the training material, the exam link very soon on email. Otherwise, in case you have any questions, just free feel to contact me. Thank you. Bye bye.